Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you for class? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear for class, today's our topic is capital letters. As you know, there are 26 letters in our English. Can you see these letters? Yes, these are all in capital. Two standards we use in our English. First standard is capital alphabet and second one is small alphabet. But student, the main thing is capital letters कहाँ, कैसे और किस तरह यूज़ होते हैं. कैपिटल लेटर्स को यूज़ करने के कुछ ख़ास रूल्स होते हैं. I mean to say capitalization rules. We have to know these rules to correct form of our sentences. अगर आप ये रूल्स अपने ज़हन में सेट कर लें या अपने माइंड में फिक्स कर लें या अपने ज़हन नशीन कर लें, याद कर लें, निशानी लगा लें, क्लूज़ या हिंट्स रख लें, तो बेटा कभी भी आपको अपने सेंटेंसेस में अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक में कैपिटल लेटर्स के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ये रूल्स क्या हैं? लेट्स सी. स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कैपिटलाइजेशन रूल्स. कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड इन. कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ कि हमारे सेंटेंस में वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना लाजमी है. नाउ लेट्स सी. टू बिगिन अ सेंटेंस, रिमेंबर दिस, ऑलवेज फर्स्ट लेटर ऑफ योर सेंटेंस शुड बी कैपिटल. यानी आपके सेंटेंस का पहला लफ्ज़, पहला फर्स्ट वर्ड जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है. नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स एंड स्पेशल डेज. स्टूडेंट्स, ये वो वर्ड्स हैं, ये अगर आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आए, मिड में आए या एंड पे आए, दीज वर्ड्स शुड बी विद कैपिटल. लाइक नेम्स ऑफ डेज. डेज मीन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. तो आप कैसे लिखेंगे? कौन सा रूल आप फॉलो करेंगे? विच वन? दिस वन? नो, दिस वन. इट्स नॉट करेक्ट. दिस करेक्ट. फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल. नॉट ऑल द वर्ड्स आर इन कैपिटल. Okay, next is months. As you know, January, February, April, May, August, these are all should be with capital letter. And next is special days. Do you know our special days? Yes, Eid al-Fitr, Eid al-Azha, Yom Ashura, these are all our special days. These words also should be start with capital letter. Okay, next is names of cities, places and countries. Cities name like Faisalabad, Islamabad, Karachi, Multan, these are all should be capital. Places mean आपके शहर में जो places हों like zoo, museum, schools, universities, these are all words should be first word is capital. Next is countries like Pakistan, China, Iran, India, America. These words should be start with capital. Very good for class. Next one is names of streets, roads and rivers. Streets जहाँ पर बेटा आप रहते हैं, जिस जगह आपका घर है, उस स्ट्रीट का नेम भी कैपिटल में आएगा. लाइक अली स्ट्रीट, हमजा स्ट्रीट, शेख स्ट्रीट. These are all should be start with capital letter. Next is roads.
रोड्स का नेम भी अगर आपके सेंटेंस में आए तो दैट शुड ऑल्सो स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, लाइक झंग रोड, कश्मीर रोड, सत्याना रोड. These are all should be very good for class capital letter. Rivers. Do you know how many rivers in our country? Yes, very good for class. 5 rivers are in country and their names should be start with capital letter in a sentence. अगर आपके सेंटेंस में आ जाए तो वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, लाइक रिवर चिनाब, रिवर सतलुज, इंडस रिवर. These are all should be capital letter. Next one is names of houses, buildings, public places. आप जिस घर में रहते हैं या आपके फ्रेंड्स जिस घर में रहते हैं उनका जो प्रॉपर नेम होगा उस घर का वो भी कैपिटल लेटर होगा, लाइक बाजवा हाउस, मियाँ हाउस, शेख हाउस. These are all should be capital letter. Next one is buildings. आपके कंट्री में या आपके सिटी में मौजूद जो बिल्डिंग्स हैं वो उनका नेम भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. इन बिल्डिंग्स में हमारे होटल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स की बिल्डिंग्स ये तमाम आ जाती हैं, इनको भी कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक प्लेसेस. ऐसी प्लेसेस जहाँ जो पब्लिक के लिए हो, जो आवाम के लिए हो, जो सिर्फ एक पर्सन के लिए मुख्तिस ना हो, उसको कहते हैं पब्लिक प्लेसेस, लाइक पार्क्स, लाइक फैसल मस्जिद, बिलाल मस्जिद, बादशाही मस्जिद, शाही किला और फोर्ट. These are all should be with capital letter. Okay? हम इनका फर्स्ट वर्ड किससे करेंगे? वेरी गुड फॉर क्लास कैपिटल लेटर से. ये 5 रूल्स हैं बेटा, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये 5 रूल्स हैं कि अगर आप इन 5 रूल्स को अपने माइंड में फिक्स कर लें, अपने जहन नशीन कर लें, इनको अच्छी से याद कर लें, या इनकी कोई निशानी जिस तरह आप अपने सबक निशानी लगा के याद करते हो, इनको कोई क्लूज़ के साथ, कोई निशानी के साथ याद कर लें, तो बेटा आई एम श्योर कि आपको अपने सेंटेंसेस में ग्रामेटिकल मिस्टेक कभी नहीं होगी. इन कैपिटलाइजेशन रूल्स कभी भी आपको आपके सेंटेंसेस में ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन सा वर्ड कैपिटल होना चाहिए और कौन सा वर्ड स्मॉल लेटर में आएगा. गॉट इट? वेरी गुड क्लास. नेक्स्ट लेट्स सी few examples of capitalization rules. Students, now let's see few examples where we will put capital letter in our sentences. Now see, my pet dog Sam plays with Asif. Is it a correct sentence? Very good. No, it's not a correct sentence. So you tell me for class, where I will put capital letter in this sentence. Yes, first word should be capital. My. Next, my pet dog Sam. Sam is the name. Name should be first word is capital. Yes. Next, plays with Asif. Again Asif, this is the name. So Asif should be a capital. Next is, I think February is the shortest month. अब इसमें बताएं कौन सा वर्ड कैपिटल होगा? Yes, very good for class. First word should be capital I. I हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जहाँ पर I सिंगल आए यानी अकेला आए तो वो कैपिटल लेटर में ही यूज़ होगा, चाहे वो सेंटेंस के मिड में आए, चाहे वो सेंटेंस के एंड पे आए. और फर्स्ट वर्ड तो यू नो कि शुड बी कैपिटल. आई थिंक February, yes, F should be capital because month name is the shortest month. Month is not a name, just month. It will not be capital. Okay, so this sentence is complete now. नेक्स्ट इज आई लिव इन जौहर स्ट्रीट. मैं जौहर स्ट्रीट में रहती हूँ या रहता हूँ. स्टूडेंट्स, नाउ यू विल कंप्लीट दिस सेंटेंस बाय पुटिंग कैपिटल लेटर.
Yes, tell me where I will put capital letter. Yes, very good. First sentence, first word of this sentence. I live in जौहर स्ट्रीट. कहाँ रहता हूँ मैं या कहाँ रहती हूँ मैं? जौहर स्ट्रीट में. तो J शुड बी कैपिटल. कंप्लीट नेम है ना, तो जौहर स्ट्रीट. हम सिर्फ जौहर को नहीं करेंगे, स्ट्रीट को भी साथ करेंगे. अगर हम सिर्फ जौहर को करेंगे तो फिर क्या जौहर, स्ट्रीट तो फिर कंप्लीट नहीं होगा ना. प्रॉपर नाउन तब होगा जब हम उसको कंप्लीट करेंगे. जौहर स्ट्रीट इज अ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन हमेशा, do you know what's the definition of proper noun? Yes, किसी खास चीज़ या जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. तो फिर क्या होगा, ये है प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन शुड बी ऑलवेज इन स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान? डू यू नो व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान? Yes, Islamabad. Islamabad is the capital city of Pakistan. Now correct this sentence by putting capital letter. Yes, first word should be capital. What is the capital city of Pakistan? Very good for class. P should be capital of our Pakistan. I hope now you understand this very well. Now let's see one more example of capitalization rules. Now can you see this paragraph? You will now tell me where I will put capital letter in this paragraph. Yes, very good. First of all, first letter should be capital. Last Monday is the name of days, so Monday should be M capital. Last Monday, 3rd of September. Again, September is the name of month. Yes, so S should be capital. September, comma, our teacher, Mr. Harris. Teacher name, Mr. Harris, is the proper noun. M should be capital and H should be capital. Mr. Harris announced that Faiza is again the name, so F should be capital. Faiza and Ali का क्या करेंगे? Yes, Ali का भी A capital होगा. Very good for class. अब तो आपको समझ आने लग गया है. Won the prizes donated by Dr. Kamran. Oh, क्या हमें मिस हुआ? Yes, डॉक्टर कामरान. डॉक्टर का D should be capital and again next is K should be capital of the name of Dr. Kamran for the best story about Africa. Now complete? No? तो क्या ठीक करना था? Yes, very good for class. Africa का A should be capital because it's a name of country. Very good for class. Remember these 5 rules for capitalization rules. If you remember this very well, you will never get a problem in your sentences where and how you will put capital letters in your sentences or either in your paragraphs. So please do this work on your assessment sheet as well as your workbooks also. Okay. 56 से 59 पेज तक बेटा ये सारा काम कंप्लीट करें. Now you can better understand punctuation family and also capitalization rules. I hope आपको ये सब अच्छी तरह समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह आप ये काम अब खुद से करेंगे. गुड. फी अमानिल्लाह.